उधार चल रहा है, स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन में, राशन दुकान में, पेट्रोल दुकान पर, दारू का दुकान पर नहीं चलता है उधार। Human society works to thrive, but they are permitted to live only like laborers. No matter how much they sweat day and night, no matter how hard they work, no matter what the result of the blood toiled, end of the day, most of them have no proof to claim citizenship in this country. With the pandemic going on nowadays, it has become more tough for them to manage their daily gruel and find a place to work with people worrying about the spread of the pandemic. COVID-19 has been a tough time for the people who work in the IT firms in the country, and less needs to be defined for people who work in the kilns and all the construction sites during this period. With the shortage of wages and the amount of hard work to be put remaining the same, it is a dilemma for the daily wagers during this period. मेरा नाम कमल है, मैं नेपाल से आया हूँ। भूपेंद्र बारी। मैं तो सिवान बिहार से आया है, अब कैमरा कर रहा है, ठीक है। मेरा नाम कल्पना है। मेरा नाम राजू है, हम नेपाल से आए हैं। वीर मोहम्मद आकिल। मेरा नाम जहीर खान है, बागेपल्ली से आया हूँ। मकसूद अहमद, बागेपल्ली से आया हूँ मैं। निम्न दसरो अंजन कोविड में तो बहुत बुरा हाल है। अभी तो पहले जो मिलता था वैसे अभी थोड़ा कम मिल रहा है, काम भी अभी नहीं मिल रहा है तो ये काम है, दूसरा काम कोई नहीं है। तो कैसा चल रहा है आपका? पैसा वैसा ही चल रहा है, पैसा बिल टाइम से नहीं मिल रहा है। बस को खाना खिलाया, हफ्ते हफ्ते 1,000 रुपया देकर, काम करने वाला आदमी पेमेंट नहीं दिया है बराबर। अभी पूरा काम छूट गया, कोई लोग बुलाएगा फिर। अभी तो काम भी नहीं है। कोविड-19 को भी संभाले है, कैसे भी चल रहा है। ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಕೆಲಸ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೆಲಸ ನಾವು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಯಾವ್ದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಲ್ಲ. बहुत डर लग रहा है ना, पैसा उसमें तो गुजारा नहीं हो रहा है, 2 टाइम का खाना पानी चल रहा है बस. കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാസക്കണക്കിനോളം ഈ തൊഴിലാളികൾ, നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഈ ആൾക്കാർ ലീവ് തന്നെയായിരുന്നു. अब घर में रहते थे लॉकडाउन के टाइम में, काम नहीं था, काम लॉकडाउन में बंद था, वो नहीं, घर में बैठे थे। లాక్డౌన్లో కలిసి ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಮನೆ ಥರ ಇಂಡಿಕಡೆ ఉన్నాము, ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಬಾಡಿಗೆ ಕಾಸಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. The worldwide COVID-19 pandemic is perpetrating two sorts of shock on nations: a health shock and an economical shock. The imposition of social distancing, self-isolation at home, closure of institutions, industries, and public facilities, restrictions on mobility
can conceivably prompt critical ramifications for economies around the globe, which affects the survival of the daily laborers. Half of the migrant daily wages have gone home due to the fear of their life, some fearing that what if there is not any life? Then what is the use of working hard and tough during this period? It has always been a hassle for some of the vendors nowadays because of the pandemic. अभी तो हमको गवर्नमेंट भी अभी हेल्प नहीं किया कुछ भी। अभी हम तो ऐसे ही परिवार को ऐसे चला रहे हैं कि खाने के लिए भी काम करके चला रहे हैं। कुछ भी नहीं हेल्प किया है, काम भी नहीं चल रहा है, ऐसा है। क्या हालत है? हालत तो कोविड में पूरा हालत खराब हो गया है। अभी कोरोना कम हो गया तो कोई भी बुला सकते हैं। अभी ऐसा हालत है हम लोग का, ऐसा ही नहीं काम ही नहीं है आजकल तो। गवर्नमेंट सौलभ ऐसा कोविड एक रुपया भी हेल्प नहीं हुआ भाई गवर्नमेंट से, किधर से भी। पिछले साल तो भी कुछ हुआ था, ये साल तो बिल्कुल नहीं है। കാര്യമായിട്ട് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഞങ്ങൾ തൊഴിലാളികൾക്ക്. നേരം അസംഘടിത മേഖലയിലുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പട്ടിണിയിൽ തന്നെയാണ്. സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നാമമാത്രമായ ചില സഹായങ്ങൾ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं किया, लॉकडाउन में बैठे थे, अपना मिस्त्री हेल्प किया, जो हुआ गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ कुछ भी नहीं। ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಕಾಸಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹತ್ರ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾమంటే ಊರು ಕಾಸಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಲಾಕ್ಡೌನ್లోనే ಇದು ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರಂటే ಯಾರೂ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ. Many workers could not go to their places of work or carry out their jobs, resulting in reduced incomes and increased poverty rates. Workers are desperate. Not only have they lost their major income, but now their only options are to risk contracting COVID-19 or face starvation. And as we all had noticed, many of them set out to walk hundreds, if not thousands of kilometers to return to their villages, carrying their few belongings, children on their shoulders, and no food in their bellies. Some have already perished on the way in Karnataka. They were not even allowed to go back home in a controversy that sparked allegations of bonded labor. The pandemic has highlighted the real working and living conditions of the working class people, of those who can't handle anything without their daily wages. Most of the daily wages were forced to sit back at home and not work on anything, and their only way of income having come to a stop, life was almost equal to over for them. 70 years after independence, and yet here we are with more better education and better health facilities, but still the same lifestyle that is being carried out by the laborers. काम के लिए आने नहीं देते, ऐसे बहुत बुरा था कोविड में। तो क्या बताएगा, अब ऐसे ही चल रहा है। यार 2 लड़का है, 2 4 आदमी है हम लोग का, थोड़ा एडजस्ट हो ही रहा है। ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ फैमिली का हाल बुरा है भैया, भाड़ा नहीं, घर का किराया देना है, कर्जदारी ज़्यादा हो गया है। എല്ലാം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമുണ്ട്. എന്നാലും
ചില ദിവസം ആഴ്ചയിൽ 2-3 ദിവസത്തെ തൊഴിൽ കൊണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകാം. ബാങ്ക് ലോണുകൾ നടക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വളരെ പ്രയാസകരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാൻ സിറ്റുവേഷനിലല്ല. എല്ലാ മേഖലകളും ബാധിച്ച പോലെ കൂടുതൽ ബാധിച്ച ഒരു മേഖലയാണ് നിർമ്മാണ മേഖല. ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊഴിലാളികളുള്ള മേഖലയാണ് ഇത്. നമ്മൾ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന കാര്യം. घर पे फैमिली मेरे घर पे रहती है, मैं इधर कमाने बम्बई बेंगलोर आया हूँ। हाँ, खाने भर का हो जाता है, बचता नहीं है कुछ भी। डेली कमाता था, खाने थे। 3-4 बच्चे हैं घर में, फैमिली इधर ही है, गाँव से आई है। लॉकडाउन में बैठे थे, अपना मिस्त्री हेल्प किया, जो हुआ। ಏನು ನೋಡಬೇಕು అందుకని ఇల్లే అవుతారు జోబులు అవుతారు టయానికి ఊట కూడా ಇಲ್ಲ. What is missing though is a dignified life, which should be the right of every citizen in a democratic country. The ruling class often ignores this and argues that the marginal improvement in the material conditions of many workers is enough. They even imply that the workers ought to be grateful for this slight betterment and portray as the success of the prevailing unequal economical system. In the present ruling economic ideology, equity is not high on the agenda. Neither the state nor the business grants the workers their rights. For instance, large numbers do not get a minimum wage or social security or protective gear at work sites. They do not have the security of employment. Often wages are not paid in time, and with the wages they earn, they have nothing left for them to save up for themselves and have just enough to handle their families. Given their low wages, they are forced to live in a squalid conditions, with many sharing a small room in a slum. Water is scarce and drinking water more so. Access to clean toilets is limited and there is a lack of civic amenities like sewage. Their children are often deprived of schools and playgrounds. With COVID-19 as an excuse, state after state is reducing what little security was available to workers by eliminating or diluting various laws so as to favor businesses. ಭಯ అంటే ನಾನು ಕಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವ್ರು ಕರ್ನ ಬರ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಕಲ್ಸ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಎಲ್ಲರ ಯಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ನವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇರ್ತದೆ ಮಾಯಾತವ್ರಿಗೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ವಾರಂలో ಒಂದು ದಿವಸ ಹೋಗಿದ್ದು ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ఇంటి కಡೆ ఇంకా ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ మాకు రైస్ కూడా ఉన్నోళ్ళకి బాడిగింటే వాళ్ళకి ఇచ్చుకోతున్నారు అపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి మాకు లేదు. The lockdown requires businesses to close and lay off workers or not pay them wages, again highlighting the insecure working conditions of workers. The workers have small incomes and little savings, so they cannot stock up on essentials of life to survive weeks of lockdown. They, and if their family is with them, start to starve unless someone provides them with food. ಏನು ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ.